Hello dear children, welcome you all. I hope you have seen the part 1 of chapter 3. Now it's time to move to the part 2. So let's get started. Before moving to the second part of this chapter, let's take a quick review of the first part, in which we have seen how to open MS Word, steps to open MS Word, and the two main topics, that was editing and proofing tools. In editing, we had learned about undo and redo. Undo means one step back and redo means one step of undo back. Okay. And proofing tools. In proofing tools, we have learned about spelling and grammar and thesaurus. Now it's time to move to the next topic, that is formatting tools. Formatting basically means to change the appearance of the children. Everyone like to read or to learn the interactive and colorful thing. Okay, the thing which is colorful, that will you attract more. Okay, same in document also. If it will be colorful, it will attract you more than the black and white page. That's happened with the help of formatting tools. Formatting tools are three major types: character formatting, paragraph formatting, and the third part is page formatting. This video is basically about the all formatting tools. Means एक पेज को जब हम राइट करते हैं तो राइट करने के बाद हमें उसको कैसा लुक देना है, वो पेज हमारा कैसा दिखना चाहिए, कितना कलरफुल होना चाहिए, how much photo should be added, which color of font should be there, this all decided by the formatting tool. Okay, so let's get started with the tools of formatting. The first thing is font group. The most common character formatting features are available in font group. The alphabet which we are writing, that is A to Z, comes in the font group. Okay, the changing of the alphabet in different manner with the help of these commands. The image you are seeing here, Calibri body 11 A, different colors, these are the command which use to change the font appearance, the look of the font. Now I am telling you one by one about all the command. So here BIU, B is for bold, I is for italic, and U is for underline. Now we will discuss about these three commands, that is BIU, bold, italic, underline. This is the front page of MS Word. Okay, now I'll show you what is bold, what is italic, what is underline, and how it's work. First I have written bold because we are going to discuss about the bold. The shortcut key of bold is B, Control plus B. See there, I clicked on the B and the B become more thicker, more darker. Okay, so bold is used to do the word more darker, to represent the word more thicker or more darker. Here see, first bold is written in a simple way, but when I use B, bold command, then hello word is written more darker. Now we are going to discuss about the second command, that is italic I. Italics represent with the word I. Italic is used, just I can say, just like a cursive writing, thoda sa tedha. Okay, it tilt little bit. You can see here, I am writing hello word once again, but the format is changed. The hello word is little bit tilt. It is written in a cursive way. Okay, not in exactly cursive way, but जैसे cursive writing में words थोड़े से टेढ़े, थोड़े से झुके होते हैं, सेम italic में भी ऐसे ही होता है. The third is underline. Underline name से ही समझ में आ रहा है, it underline the word. So the shortcut key of underline is Control plus U. It represent with the word U. Here I am writing hello word. The U command is active, so hello word is underlined. Now see the use of three command. एक साथ तीनों command का use देखिए. Hello
in this beautiful world. I am writing hello in this beautiful world. You already highlighted है, on है you command, तो वो underlined है. यहाँ मैंने कर्सर का ध्यान दीजिए, मैंने बी और आई दोनों को ऑन किया है. नाउ इट इज़ बोल्ड एंड इटैलिक बोथ. I hope you have understood now what is the use of bold, italic and underline. So the hello in this beautiful word line represent about the B, क्योंकि ये थोड़ा मोटा भी है, italic ये थोड़ा सा झुका हुआ भी है, and underline भी है U. Okay, bold, italic and underline. I hope you have understood these three commands. After this three command, we move to next three command, that is font size and font color. जो कैलिबरी बॉडी लिखा है that is font face. 11 is font size, it may be 11, 12, 13 to 72 and other. And font color means हमारा font ABCD कौन से color का होगा. Now I am showing with the help of video. You can see this is the first page of the MS Word. I am working on the workspace area, white page. Here I have written hello word. See the arrow children, that area is called font group. Okay, from the starting I have told you about the bold, italic, underline. So the next part is font face. See, I have first select the word hello word, और जैसे ही मैंने कैलिबरी बॉडी जहाँ लिखा था I click on that and change the different format. The look is differently changed, अलग अलग होता जा रहा था. This is called font face. मतलब आपका फॉन्ट का फेस कैसा हो, उसका लुक कैसा, हाउ यू फॉन्ट लुक लाइक, दिस विल कम्स अंडर फॉन्ट फेस एरिया. नाउ अगेन द सेम थिंग आई हैव रिटन हेलो वर्ड. नाउ सी, पहला हेलो वर्ड का फॉन्ट देखिए, फिर जैसे जैसे आई एम चेंजिंग इट, सी इट इज चेंजिंग द फेस, हाउ इट लुक्स. दिस वर्क इज डन बाय द फॉन्ट फेस. Now the next topic is font size, means how the font size will be there on your page. Just in front the font face there is written 11 is written there, 11, 12 to 72 to 100, how much we want to increase. Here hello word का साइज़ कितना है 28. अब देखो ऊपर hello word का साइज़ 28 है, बहुत छोटा है, इसलिए मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ. फॉन्ट पेज हेलो वर्ड का 28 है. नाउ आई शो यू टू आफ्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द सेम थिंग. ओके, यहाँ फॉन्ट पेज क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, हेलो वर्ड का 28. आई हैव सेलेक्टेड इट एंड नाउ आई हैव इंक्रीज्ड इट. देखो जैसे जैसे मैं इंक्रीज या डिक्रीज करते जा रही हूँ, द सेम हेलो वर्ड इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इज साइज. ओके, इट्स डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग द साइज. Now what is the size of this hello word? It is 72. The same thing you can set the size from here. Now we have to move to the another command, that is font color. I am writing the word hello word here. Now we will change the color of this font. See here, A is written over there with red underline. When you click on this command, a color palette open. You can select the color according to your need, adjust the size and click on the color palette. Whatever color you want, you can easily select it and color your font. This is the use of color palette, that is font color. What color I have selected? Red color. So this is the three command, that is font face, font size and font color. Now the last three command, that is increase and decrease font size, superscript and subscript and text highlighting. Again we will see with the help of video. Firstly I will show you about how text highlighting work. Here I have written the same word hello word. Okay, मैं एक ही एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप एक ही वर्ड पे अलग अलग कमांड का यूज़ समझ सकें. See, I have clicked on the text highlighting command and the same color palette open. और जैसे ही different color palette पे मैं click कर रही हूँ, color palette change भी हो रहा है. I have increased the size so it may be more visible to you. Okay, I am changing the color palette, different colors, taking the different colors from the color palette and see एक background highlight हो रहा है उस word का. This work is done by the text highlighting. Okay, font highlighting command.
After text highlighting, the next command which I am going to show, that is increase and decrease the font size. पर्टिकुलर फॉन्ट साइज़ को आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करोगे विदाउट टचिंग दैट फॉन्ट साइज बार. ओके, जो 1 2 3 4 बार आ रहा था, अब उसको टच किए बिना डिफरेंट कमांड से कैसे यूज़ करोगे. अगेन आई एम राइटिंग हेलो वर्ड हियर. नाउ सी एट दैट साइड फॉर इंक्रीजिंग फॉन्ट a big A is written over there, okay, and for decreasing small A is written over there. Now I'll show you how increasing font work. I have written hello world, okay, I have selected the word and I am going to click on that big A. Whenever I am going to click it, it is getting bigger than earlier. This work is done by the increasing font size, big A. Now decreasing font size. Decrease from here also, but I am telling you how to decrease directly. So we will see how to decrease font size. Again I have written the same word, that is hello word. Now see, I am decreasing it. First I have selected it, और जहाँ से मैंने बिग ए क्लिक किया था वहीं से मैं स्मॉल है उसके बगल में, वहीं से क्लिक करना है. I am clicking it again and again, it is getting decreased. Okay, जितनी बार आप क्लिक करोगे ये डिक्रीज होता जाएगा और स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता जाएगा. सी इट इज़ हैपनिंग ना बेटा. सो दिस वर्क इज डन बाय द डिक्रीज फॉन्ट साइज कमांड. लास्ट टॉपिक इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. First we have learned about the text highlighting, then increase and decrease font size. Now the third topic of this section is subscript and superscript. Now what is subscript and superscript? First we will understand about it. Whenever you are writing first, second, third, जैसे आप क्लास लिखते हो, you are of class, okay, I am writing class थर्ड. सी जैसे ही मैंने 3 और आर डी लिखा, थर्ड आर डी अपने आप ऊपर हो गया, डैट इज सुपर स्क्रिप्ट. यू कैन सी हियर आर डी इज स्मॉलर देन द नॉर्मल टेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट अगेन आई एम राइटिंग थर्ड डी. ओके, अब मैंने जैसे ही थर्ड डी लिखा और इंटर या स्पेस प्रेस किया, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप छोटा होकर ऊपर हो गया, क्योंकि थर्ड जब भी हम लिखते हैं तो आर डी, या सेवेंथ लिखते हैं तो टी एच ऊपर ही होता है. आई एम चेंजिंग दिस. ओके, फॉर चेंज फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट द वर्ड आर डी, और फॉन्ट ग्रुप में एकदम कॉर्नर में एक एरो है. नाउ आई क्लिक दैट एरो एंड सी द डायलॉग बॉक्स ओपन. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिखा है. आई सेलेक्टेड द सबस्क्रिप्ट. जैसे ही मैंने सबस्क्रिप्ट पे सेलेक्ट किया, आर डी अब का स्पेस अब कहाँ है, डाउन साइड पे. ओके, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. पहले आर डी की स्पेस कहाँ था, अप साइड पे, डैट इज सुपरस्क्रिप्ट, मीन्स ऊपर था. नाउ इट इज़ इन डाउन साइड, डैट इज सबस्क्रिप्ट. क्योंकि मैंने सबस्क्रिप्ट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो सब स्क्रिप्ट पे डाउन साइड पे लिख रहा है. सी व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द फॉन्ट, वो पूरा एरिया इंक्रीज हो रहा है. तो हमें क्या करना होगा, सबस्क्रिप्ट के एक्टिव कमांड को डिसएक्टिव करना होगा, उस पर अगेन क्लिक करके. डिसएक्टिव कर दिया मैंने. नाउ सी सबस्क्रिप्ट नॉर्मल हो गया. दिस इज हाउ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट वर्क. Only this much for this video. Now what we have learned today? We have learned about the different formatting tools. And what was the formatting tools? Bold, टेक्स्ट को मोटा करना, थिकर करना, इटैलिक, टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना, अंडरलाइन व्हेन वी वांट टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, फॉन्ट दैट इज फॉन्ट फेस, हाउ योर टेक्स्ट लुक लाइक, फॉन्ट साइज दैट इज हाउ योर टेक्स्ट साइज विल बी, इट मे बी स्मॉल, इट मे बी बिगर, फॉन्ट कलर, हाउ योर फॉन्ट कलर दिख लाइक. सेम जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर येलो लिखा है और ऊपर मस्टर्ड येलो लिखा हुआ है. नेक्स्ट, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर मीन्स how you will highlight the background.
Then increase and decrease font size means without touching the font size area, we can easily click on a single command and increase the decrease font size according to our need. And the last one is subscript and superscript. जो मैंने थर्ड जिसमें RD ऊपर था, अगर ऊपर लिखा हो that is superscript और नीचे लिखा हो that is subscript. Children, see this video twice, thrice, so it may be easily to understand about all the topic for you. Now it's time to do the worksheet. We will meet soon. Stay safe, stay healthy. Thank you.